ट्रांसप्लांट के बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं जानते हैं। और आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे अहमदाबाद के जाने माने प्लास्टिक सर्जन, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और एवेन्यू हेयर ट्रांसप्लांट के फाउंडर डॉक्टर किन्नर कपाड़िया से। हेलो, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। डॉक्टर, क्या है ये हेयर ट्रांसप्लांट जो आजकल बहुत चर्चे में है? सी, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके जो खुद के बाल होते हैं पीछे और साइड में, उसको हम लोग पीछे और साइड से निकाल के इधर लगाते हैं। अब पीछे और साइड के बाल होते हैं परमानेंट। अब किसी को भी देख लीजिए, पीछे और साइड के बाल नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग रूट वाला बाल हम इधर से निकाल के इधर लगाते हैं, तो जैसे इधर ग्रो हो रहा था वैसे अभी वो इधर ग्रो होगा। दैट इज इन ब्रीफ अबाउट व्हाट इज हेयर ट्रांसप्लांट। डॉक्टर, कौन करवा सकता है ये? सी, एनी एडल्ट मेल हु इज एक्चुअली बॉल्ड, यू नो, जहाँ चमड़ी दिख रही है, मेल या फीमेल एडल्ट जहाँ पर चमड़ी दिख रही है, दे आर द कैंडिडेट्स फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। वी हैव डन patients who are at 20, 21 years also, and we have done at 70, 65, 70 years also. So if you're falling in that age group, then you can definitely go. But the criteria, important thing is कि you know you should be bald और वो चमड़ी दिख रही है ना, that is the criteria. Okay. डॉक्टर साहब, क्या ये एक रिस्की प्रोसीजर है? क्या रिस्क इन्वॉल्व है इसमें? See, hair transplant by and large is a very safe surgery. Okay. It would become risky अगर आप अनक्वालिफाइड पर्सन से सर्जरी करवा रहे हैं, अगर आप ऐसी जगह से करवा रहे हैं जहाँ सर्जिकल इक्विपमेंट्स और वो चीज़ें नहीं है, या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर वो जो टीम है सर्जरी की वो डायरेक्ट डॉक्टर के अंडर में कंट्रोल में नहीं है, तो इसमें दो तरह के रिस्क हो जाते हैं। एक आपके रिजल्ट मिलने का रिस्क, और सेकेंड रिस्क इज अबाउट दी योर मेडिकल रिस्क, बिकॉज यू आर अंडरगोइंग अ प्रोसीजर। सी, एट एवेन्यूज the whole thing is led by a qualified plastic surgeon, because I'm going to lead the whole thing. See, it's a plastic surgery and I would prefer to go to a plastic surgeon. That's my belief. Okay. The team is working with us for quite a long time, and we have a fully functional operational operation theater with all fully equipped things, so the risk becomes very minimal. Okay. And the results are even better. ओके। डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? व्हाट आई फील सबसे इम्पोर्टेंट है रिजल्ट्स। ये सर्जरी कोई बार बार तो करवाता नहीं है, ठीक है। रिजल्ट्स यानी क्या होता चाहिए कि जहाँ पर हम बाल लगाते हैं वहाँ की चमड़ी नहीं दिखनी चाहिए, हेयर ग्रोथ एकदम नेचुरली होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट लुक कि आपने कोई ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। So these things can be achieved by see, what happens is it's a very competitive field, तो sometimes जब decision लेना होता है तो people rest all their सारे decision वो cost के ऊपर लेते हैं, वो choose करते हैं depending upon the cost. I believe, see, cost, अगर आप सिर्फ cost ही आपका factor रखेंगे, then there is a chance that you might make a mistake. You need to look at the results. You need to look at the results, proven results of a clinic, and that should be your criteria to make a decision about hair transplant. At Avenues, we have a large number of satisfied patients. So see, it's results that is very important. Yes. That's what I wanted to stress, not just the cost. Very true. Thank you, Dr. Saab. Basically, we have all the instruments. We have instruments. We have different microscopes which we use mainly for FUT purposes, where we use the slivering and cutting used to be done under these microscopes. For FUE, mainly the single grafts which we take in the front, that is the one which we separate the skin over here. For follicular unit excision method also, our workhorse has been mainly been the valve system. We even have our normal routine system as well. Well, we believe that you need to have different punches to, not a single punch, not one single punch will suit one patient. We need to have different variety of punches to make sure that we get the best result in the patient. Our main punches have been these Turkish punches, and we've been routinely using the keep system also. हेलो, મારું નામ છે અનિલ ચાવડા। 11 મહિના પહેલાં મેં અહીંયા હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યા। એની પહેલાં મને આના વિશે બહુ નોલેજ નહોતી, મારા વાળ ઘણા બધા ખરતા હતા, અને મારા એક મિત્ર મને એવેન્યુ વિશે જણાવ્યું, અને પછી હું અહીંયા આવ્યો, મેં હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યા, અને આજે 11 મહિના પછી એનું પરિણામ જે જોઈ શકાય છે, અને એના લીધે જે પહેલાં
હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યા પહેલાંની જે પરિસ્થિતિ હતી અને અત્યારની પરિસ્થિતિ હતી એમાં મને અમુક આત્મવિશ્વાસના લેવલે અને દેખાવના લેવલે ઘણો ફરક લાગે છે અને એના લીધે હું થોડું હેપી ફીલ કરી શકું છું. થેન્ક યુ. Hello, this is Dr. Hemal Prajapati. I'm an anesthesiologist. I underwent hair transplantation 6 months back and I have got excellent results, and my relatives, friends and professional friends are very much impressed by my results. Being an anesthesiologist, I see the surgical as well anesthesiologist safety protocols and norms which are continuously followed here, and that's why I recommended and I preferred this place for hair transplantation. So I will recommend you to select this place, Avenues Clinic, Dr. Kinnar Kapadia's hospital, for hair transplantation if it is suggested. Thank you.